नाउ हेलोजेनो अल्केन का जनरल फॉर्मूला ये है प्लस एक्स, ठीक है। अब जितने एक्स बढ़ते जाएंगे एच कम होते जाएंगे। लेट सपोज CnH2n(x2), CnH2n-1x3. The formula is getting modified according as number of halogen atom are increasing in a molecule. ठीक है जनाब। तो हम अभी बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को लेते हैं जिसमें एक हैलोजन है, राइट जी, जिसमें एक हैलोजन है इसमें। अब वो हैलोजन लाइक मैं यूं कह लेता हूं C2H5X। एक हैलोजन है तो क्या ये फॉर्मूला मैच होता हुआ दिख रहा है? जी। ठीक है। अगर दो हैलोजन होंगे तो दिस विल बी C2H4X2, और तीन हैलोजन है तो C2H3X3, राइट। तो तीनों एक एक जनरल फॉर्मूला से मैच होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे पहले। क्लासिफिकेशन ऑफ halogeno alkane. Classification is upon the basis of how much alpha carbon, the carbon that has X, crowded with R groups. फर्ज करो कि इसके पास कोई R ग्रुप नहीं, ये मिथाइल हैलाइड है, एक हैलोजन है, या मैं इसको कह सकता हूं हैलोजिनोमीथेन। दिस इज द सिंपलेस्ट क्लास। अच्छा, आप तो कहते क्लासिफिकेशन में we have to look at the R group on top of the carbon or around the carbon? R group on alpha carbon. Okay. Alpha carbon is that carbon which is connected to halogen. Okay. ठीक है। अब जरा देखो सेकंड टाइप, ये मिथाइल टाइप, द मोस्ट रिएक्टिव टाइप। दूसरी है प्राइमरी टाइप। अच्छा, क्या मिथाइल प्राइमरी है? एक लम्हे को मैं इसको कह भी सकता हूँ हाँ इट इज प्राइमरी, और एक लम्हे को मैं इसको नहीं भी कह सकता, और अगर कह लूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं। प्राइमरी का मतलब क्या? आप जरा देखो, दिस इज क्राउडेड फ्रॉम वन साइड विद आर। ठीक है। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 2। तो मैं ऐसे कह रहा हूं दिस इज प्राइमरी टाइप। ठीक है। थर्ड टाइप क्या हो जाएगी? आर ग्रुप कितने तरफ? दो तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी टाइप। एंड टर्शियरी वुड बी जब हर जगह आर ग्रुप हो जाए। अगर तीनों तरफ आर ग्रुप आ जाए तो ये हो जाएगा टर्शियरी टाइप। तो मेरे पास ये तीन क्लासेस। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन, एक तो रिएक्टिविटी इस बेसिस पे चेंज हो रही है। दीज आर मोस्ट, थोड़ा छोटा कर सकते हैं ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा थोड़ा छोटा। एक तब सही है जी सर। अब वो जब हटेगा ऊपर से डाल दीजिए। या इट्स फाइन। ठीक है। ठीक है। जी। ये तो मेरे पास बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई, और दे आर गेटिंग लेस एंड लेस रिएक्टिव। अब रिएक्टिविटी को मैं जज कर रहा हूं अपॉन द बेसिस ऑफ क्राउडिंग। जितना ज्यादा क्राउडेड होगा उतना लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और ये मोर रिएक्टिव। मैं इसको एक्चुअली स्पीड ऑफ रिएक्शन से टैली कर रहा हूँ कि कहाँ मुझे इनिशियल रेट फास्ट मिलेगा और कहाँ मुझे इनिशियल रेट स्लो मिलेगा। तो टर्शरी तक पहुंचते पहुंचते इनिशियल रेट स्लो हो जाए। उसकी कुछ वजूहात हैं, जब मैकेनिज्म शुरू करते हैं तो बताते हैं।
ठीक है। अच्छा, reactivity, how fast or how slow the reaction is, also depends over the type of halogen connected to carbon. And that's the way reactivity is increasing. How come, sir? देखो, C और F का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और C और I का बॉन्ड बहुत वीक है. You can compare the bond energy. स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका है? CNF का. और वीकेस्ट बॉन्ड किसका है? CNI का. ये बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब ये बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये बॉन्ड मुश्किल से टूटेगा और रेट को स्लो करने की कोशिश करेगा. तो ये क्लासिफिकेशन तो इसी बेसिस के पर, लेकिन इससे मैं रिएक्टिविटी को भी जज कर सकता हूँ कि आयोडो ईथेन can be causing a reaction fastly compared to fluoroethane. And this depends over the strength of a bond possessed by the particular halogen. ये तो एक बात. दूसरी बात देखते हैं. अब ये देखते हैं कि what type of reaction they can cause. देखो, कोई भी अगर let's talk about primary halogen. प्राइमरी हैलोजन एल्केन में CH कुछ इस तरह से है और यहाँ X मौजूद. अच्छा, there is a polarity between carbon and X. It is more electronegative as it is more electronegative. So this tend to pull electron towards it and makes this halogen slightly negative and this carbon slightly positive. Now, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें सबसे पहले दिन क्या बताया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री जिसमें कार्बन की बेसिस पे प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है. If carbon is slightly positive, so that means carbon is having electrophilic. Yeah. So that means what can attack carbon? So, negative. Nucleophile can attack. Yeah. Always remember, attack always generate from nucleophile to electrophile. Yeah. ठीक है. जी. अच्छा, ये इसको अटैक करना चाहता है, ये बाहर जाना चाह रहा है X, क्योंकि X is stretching electron of carbon. तो जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेच कर रहा है, carbon is not in primary halogen alkane. Carbon is not stable enough to allow this X to leave just like that. Okay. This carbon, as it has less number of R groups, it waits for nucleophile to attack, then it allows X to leave. Okay. इसका मतलब primary halogenoalkane can't form stable carbon cation. ये एक स्टेबल कार्बन कैटायन नहीं बना सकता. क्यों? क्योंकि इसके पास R ग्रुप एक R group एक ही है.
अब जरा देखो, जी, दिस इज तो सर लीस्ट पे इसका स्टेबल। रिएक्शन एक मिनट रुको, ओके, जी जी ठीक ये 3 किस्म के कार्बन कैटाइन तुम्हें नजर आ है, जी रहे, एक ये और एक ये। जी A carbon cation which is crowded with most number of R group or carbon chains, this is having most stable carbon cation. So this can live, having positive charge over it. This can survive, ओके, but this cannot survive the primary thing. But सेकेंडरी क्या है? secondary can go either way. It ओके, may not survive or it may survive. That राइट, depends over its choice. ओके, ठीक है, अब जरा एक चीज सोचो पहले, ये स्टेबल कार्बन कैटायन नहीं बना सकता, तो ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म में जाएगा, और मैकेनिज्म ओके, इसका क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज फॉर द प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट? एक मिनट, ये भी जनरल नाम है फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, राइट, प्राइमरी टाइप, as they cannot produce stable carbon cation, so they will go for which mechanism? SN2 mechanism. ओके, And tertiary type, which can produce stable carbon cation, they will go SN1. Sir, what does that mean? SN2 or SN1? ये 2 और 1 में क्या, राइट, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो छुपी हुई? SN2 का मतलब होता है बाय मॉलिक्यूलर nucleophilic substitution. Like both the events will be happening at the same time. Attack of a nucleophile and leaving of like another nucleophile. एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, एक्स कार्बन का इलेक्ट्रॉन स्टील करके न्यूक्लियोफाइल बन के जा रहा है। सो दिस प्रोसेस, अच्छा, एक न्यूक्लियोफाइल आना और एक न्यूक्लियोफाइल का जाना, इसे क्या बना रहे? सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। ये दोनों काम राइट, एक ही लम्हे में हो रहे हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड SN2 प्रोसेस, जी, राइट? रीजन हम जान चुके हैं। अब जरा एक मरतबा फिर हम जरा इसे देखते हैं। SN2 mechanism is for primary halogeno alkane or X polarity, partial negative, partial positive, nucleophile attack. So they would be, as this is not capable of producing stable carbon cation, so this will be appearing this way, proving one of the nucleophile is leaving, which is X, and one of the electrophile will be attacking, that is Nu. So sir, right now I can find carbon having 5 bonds, or it seems like that this has 5 bonds. So I can say that this is the transition phase or transition state of the reaction, which will ultimately convert. अब इस दौरान क्या हो? X has lost R dash H dash H dash Nu. So X is replaced by Nu, and both the events are happening same time. So this mechanism is called SN2 mechanism. Is that making some sense? नहीं सर, फर्स्ट आपने जब ये ट्रांजिशनल स्टेट कर दिया उसके बाद
R के बाद N आपने इस तरफ कर दिया, X का आपने arrow downwards कर दिया. Okay sir, okay, I got it. सही है. ठीक है, X is जी, I lost got it. and Nu is substituted the position of X. I have Right, got new product. One nucleophile is substituted by another. right, अब right. अब जरा देखते हैं SN1 में क्या होगा. सर जो आपका ऊपर वाली था वो आप जरा इसको छोटा कर देंगे ताकि मैं ऊपर वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लूँ. जी इस चीज बस ठीक है सर. स्क्रीन मेरी हो गई है ब्लर. सर एक सेकंड सर, एक सेकंड. जी बस एक सेकंड. जी सर ठीक है. ठीक है, और ये बॉटम पार्ट भी. जी सर वो मैं ले लिया था. ठीक है, मैं वापस इसको जूम इन कर लेता हूँ. Now, in SN1, which is usually preferred by tertiary halogenalkane, X. Now, this in this process, like SN1 matlab unimolecular nucleophilic substitution. That means both the events, leaving of the attached nucleophile and attack of a new nucleophile, will be happening in a separate steps. As I know that this carbon has 3 R groups, and these R groups are conveying their inductive effect to this central carbon. अब inductive effect का मतलब क्या? They are conveying their negativities negative. Sir, what does that mean? Conveying negative. If this steals जी electron of carbon, so this becomes positive. That means there is a deficit of राइट negative charge happening over this carbon. राइट. So which is supported by the R group. R groups are sending their own negativities or their own electronic effect. This electronic effect will be considered as or called as inductive effect and support this carbon. Like they are saying, they must be saying to them, to this carbon, that carbon, don't you worry, let it go. We are here to support you. But unlike the previous case, this has just one R group. This was not enough राइट. to make this satisfied or relax, that let it go and wait for the new. So, which is why simultaneously both the things are happening. But here, राइट. one by one. So, by the way, this step is slow. This is step number 1, that is slow, and slow step is always rate determining step. Take it. जी If the reaction is slow, that is because of this first step. राइट. Okay. So, sir, if we're talking about a secondary structure, so you said it could either be SN2 or SN1. So then, how do Yes. we determine which No, case it you is? don't need to. It's your choice to go with whether SN1 method or SN2 method. Okay, There's no okay, restriction that you have always have to come with SN1 or SN2 with secondary case. It's your choice. okay, sir. ठीक है? In step number 2, this carbon, this stable carbon cation, now I'll call this stable carbon cation. This is stable carbon cation, and now this will be attacked by the nucleophile and will form RCRRNU. And this is comparatively faster step.
because you know that like plus and minus charge, they can easily attract each other. So this step is slower, but the process of the first step in which this heterolytic sort of fission. If you look at this, मैं यहाँ side में R dash तो C सर dash एक्स तो R. आपने ऊपर वाले रिएक्शन में आपने एक्स को तो साइड में कर दिया ना, फिर आपने जो न्यूक्लियोफाइल दिखाया वो अटैच हो जाएगा एंड देन यू सेकंड स्टेप में वी डोंट शो एक्स, राइट? Yes, obviously, because this is separated in the first step. ओके. But here, एक चीज जो तुम्हें याद रखनी है, if X is stealing carbon's electron, what kind of splitting is this? This is called heterolytic fission. What is that? Heterolytic fission. Fission, right. Heterolytic means unequal, or rather you call it unequal division of bond as a species turning into cation and anion. Right. In case of homolytic fission, both the electrons will be gained by each species. You remember we did that in case of chlorine, Yeah. right? So here, what type of fission is happening? Heterolytic fission. Unequal division of bond. ठीक? Which is causing this thing to वो happen. आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में किया था ना, आपने नीचे लिखा Homolytic था वाला. मेरे. या. ठीक है? अच्छा. So these are two processes, two methods of doing nucleophilic substitution. SN1 type or SN2 type. ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे the second thing that starts. Property number 1 or example number 1 of nucleophilic substitution. Property number 1. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को तुम 3 अंदाज में सोच सकते हो. Conversion of halogeno alkane into alcohol, right? Otherwise, you can call it SN reaction of halogeno alkane with sodium hydroxide. Let's suppose. अच्छा, अब पहले तो तुम्हें रिएक्शन की समरी याद करना कि whenever you are asked to convert halogen alkane into alcohol, what will be your reagent? Reagent will be sodium or potassium hydroxide. But remember, this is the reagent. What is the second reagent? Chloroethane. This is the organic reactant. This is the source with which you are converting it. The second thing that you need is condition. For this reaction, you need essentially aqueous conditions. What do you need? Essentially aqueous condition plus reflux heating. Plus what? Reflux. Sir, you Reflux said heating. reagent में it could be any of the two NaOH या potassium वाला, Yes. and chloroethane you said, is that like one वो The one या it could also change? like जो भी that is halogen 1 के. mole, right? That will be 1 mole. But this is the source which is to be converted into alcohol. All right? This Okay, is the sir. So compound. that could be either chloro, fluoro, whatever that Yeah, could be. but fluoro के case में I told you bond is stronger, so the rate will be slower. So I'm selecting, I can take iodoethane. The rate of reaction will be fastest. So let's take Right. iodoethane. CH3
CH, H, I. There is a polarity. This hydroxide ion, which is attacking on partial positive carbon. CH3, H, H, iodine leaving, iodide leaving, hydroxide incoming. So this is leaving nucleophile. And this is attacking nucleophile. And this is a transition phase of the product. And this turns into ultimately CH3, like iodide comes over here, CH3, CH2, OH. See, I've got alcohol. अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और समझना है. So जो ऊपर करेंगे तो I can take the picture of the reagent. एक मिनट, hang on. Let me complete the reaction. C, like overall it is C2H5I, जी. NaOH gives C2H5OH plus NaI. ठीक है. 1 second, sir. C2H5I with NaOH. सही, okay, right. ठीक है. ठीक. ना अब ऊपर चलते हैं, जरा तुम उसकी पिक्चर ले लो. ठीक है सर. If I do this with any tertiary halogen alkane, conditions will be same, reagent will be different, one of the reagent, organic reagent will be different. So देखो, CH3, 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 I, first, like once the reagent is added, this starts its working, which is a slow process. CH3, CCH3, CH3 plus and I minus. That means in SN1 mechanism, halogen alkane allows halogen to leave. And in second step, again, you have to mention this is stable carbon cation. Now OH will attack directly to this carbon, which is a fast reaction. This will be CH3, 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 OH. ठीक है बेटा? जी जी. So it will be happening on the same mechanism. एक ही जैसा पूरा process. Now, जी. let's. और सर at the end equation लिखना जरूरी है what the examiner states. It's very in good. parts. देखो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से आता ही नहीं. हम तो मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं कि if examiner asks you what mechanism is being used और उसकी जो पूरी केमिस्ट्री है, क्वेश्चन इस तरह से आता ही नहीं है कि डायरेक्ट प्रोसीजर. हार्डली if you count तो मतलब 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस तरह का होगा जिसमें मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना होगा. हाँ जी मैंने पास पेपर्स देखे हैं. it's never straightforward. अच्छा, और one more thing, this stable carbon cation is an intermediate. ठीक है, मैं प्रीवियस केस में बताना भूल गया था. This is stable carbon cation is intermediate. अब what is the difference between transition and intermediate? The transition product cannot be extracted out of the reaction. Okay. But intermediate can be separated out of the reaction method. Okay. So that is the only difference between as a transition.
अब मैं बच्चों को समझाने के लिए इस तरह से कह देता हूँ कि कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो गए, है ना, जी और 5 जी बॉन्ड्स सर। हो गए, तो मैं इसको, ये कार्बन कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इस वजह से दिस कैन नॉट कम आउट ऑफ द रिएक्शन वेसल एज इट इज शाई, ओके। ठीक है, एंड दिस जी दिस हैज अ चार्ज, and it's like a medal on the chest of carbon. Carbon would love to have charge for anything, ठीक है, राइट। तो चार्ज होना एक प्राउड की बात है, तो ये एक्सट्रैक्ट आउट किया जा सकता है, जी ठीक है। चलो, अब एक रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, अच्छा, अब सेकंड रिएक्शन मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, उसमें करता हूँ ताकि ये यहाँ कंप्लीट हो जाए, और सेकंड प्रॉपर्टी उसके अंदर, जी एंड दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सी यू इन ओके। 2 minutes।